ओके सो अच्छा इसकी जरूरत है या आवाज आ रही क्यों जिशान? ठीक है। सो आज जो है वो लास्ट लेक्चर है, so I will continue with the discussion about entropy. लेकिन मैं एक सिंपल सा जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस करूंगा कि क्लासिकल फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में किस तरह से जो है एंट्रोपी रोल प्ले करती है टू कम अप विद इंसाइट इनटू फिजिकल प्रॉब्लम्स, बजाय इसके के वी गो इनटू more rigorous treatment of entropy, like we can talk about mutual information, conditional information, and so on, a lot of other things which are very important. लेकिन अगर हमने वो कोर्स के शुरू में होते हैं and we have to continue in that line, so we would have gone that route. But other instead of that, आज जो है वो I will discuss one fundamental concept. It's called maximization of entropy. So the concept stems from a couple of fundamental questions. So we know that probability plays an important role in classical and quantum physics whenever you have uncertainty associated with your state. So the question is that how to interpret probability. What is probability? And it's not a simple question as it's seems like, especially if you talk about probability before you do any measurement. ठीक है, अब देखें नॉर्मली लेकिन हम जो प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करते हैं वो एज अ फ्रीक्वेंसी करते हैं. ठीक है, आप एक कॉइन जो है उसको 1000 टाइम्स टॉस करते हैं और आप देखते हैं कि हेड कितनी दफा आया है, वो नंबर ऑफ हेड्स को टोटल से डिवाइड कर दें, यू से दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. बट व्हाट एसेंशियली यू आर सेइंग, it's the frequency of head in the 1000 experiments that we have already done, right? But we try to extrapolate that thing and we say that, okay, since we have done this experiment many times, probably we can infer that if I flip this coin again, the probability of head is, let's say, going to be 40% and probability of tail 60%. Okay, so it's sort of a stretch that we make, assuming everything about the universe around the tossing of coin के air pressure वही रहेगा, कोई fan नहीं on कर देता, lights are still the same and I'm the same and everything else is the same. We put all of those conditions when we say that ये जो frequency है, this is actually probability. Okay, so in practice what we are really saying is frequency, but we mean it to be probability. So related to this, question is the next question, that if we haven't done any measurement, how can we assign probability a priori before looking into your system? For example, you have a gas in a container, or a coin that you are going to toss, or a dice that you are going to flip. So before you do your experiment, how can you assign probabilities to different possibilities at different states? For example, if your gas, it might have many possible states. So each state might have some probability of being in existence. So the related question is that how to assign probability a priori. ठीक है, post measurement तो we have a sort of something which you can say can be in principle made to be as good as we want by increasing the number of measurements in the frequency. ठीक है, well,
एक बंदा 5 दफा कॉइन टॉस करता है और कहता है जी कि 50% हेड 50% टेल। एक बंदा 50 दफा करता है तो वो भी कहता है 50% हेड 50% टेल। So there is a better, faith in somebody who has done 50 times that measurement, right? So we can increase this sort of accuracy of this frequency, calling it a probability by increasing the number of measurements. But this question is, a little bit more tricky. But fortunately, people have found a way of assigning this probability that so that the results are, consistent with the measurement. And that method is called maximization of entropy. And fortunately, it is valid not only in classical domain, but also in quantum domain. So the idea is this, that subject to the constraint, this is important, you maximize either, H or S, depending on if you are in, working classical or quantum domain. You maximize them subject to these constraints, and then you find probabilities, and those probabilities are the a priori assignment of probabilities to the states. So today I'm going to exemplify this, principle by solving a couple of problems in classical, and one example in quantum domain. So in quantum, it's, mathematically the problems are a bit harder because instead of working with scalar operators, we have to work with density operator, but the idea is still the same. So let me start with a simple example. First करें आपके पास, 6-faced dice है, ठीक है, with 1 2 3 4 5 6 on their faces. अगर आपके पास fair dice है ना, तो इसका जो मीन होगा जो probability कह सकते हैं आप for each side, that would be 1/6, right? If it is fair, so there are 6 faces, all equally likely. Probability of each side we can assign it to be 1/6 because there's nothing else that says otherwise. And mean would be 3.5. You can work it out. You multiply 1 with its probability, you multiply 2 with its probability, you multiply 3 with its probability, and then add them all up. Okay? So this comes out to be 3.5. Yeah. So the question is, if instead of a fair die, we have a biased die or an unfair die, and suppose we are given that mean is, I don't know, 3.45. So now, what should be the probabilities? जी हाँ, लग रहा है कि उनकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, but what are the probabilities precisely? There's a possibility, but what would be, sort of, I don't know, that seems like that there are infinite choices, right? Okay, but may not be. Let's see. So this max ent principle says that what you do, you compute the entropy or information, and then you maximize it. और constraint क्या है? Constraints हैं जो आपकी आप कह रहे हैं काफी सारी choices हैं, they are restricted to the choices that satisfy this thing.
and that satisfy this thing. So these are the constraints that the probabilities that we assign have to bear. So we have to maximize entropy subject to these constraints, which mean that we can do it using Lagrange multiplier method. I hope that you all know. And for that, let's say I construct this quantity H tilde, which is the quantity to be maximized, plus first Lagrange multiplier 1 minus NPN, and then second Lagrange multiplier so this is the quantity that we have to maximize and then find these unknown parameter lambda and mu, और वो PNs जो इनको maximize करती हैं, that is actually the PN that we say that you know that corresponds to sort of the experimentally observed values. Okay, so you're right that there might be more than one choices, but we are looking for choices that if we really do the experiments, what are the probabilities that are going to come up if we have to make up this thing. Okay, so let's solve this thing. अच्छा, इसका मतलब है if we want to find its maximum value, it means that we have to find solution to this equation, that the variation of this function by varying probabilities has to be 0. So इसका काम आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी किया होगा, आई थिंक उसमें भी जो लीस्ट एक्शन मेथड है, दैट्स एसेंशियली द सेम. Okay, so basically this method is essentially related to that thing as well, that there is, if you can think of this thing as an action, then you can say that okay, the probabilities are those that are going to maximize this action. All right, so let's find this quantity. So h का क्या formula है? H है minus Pn log Pn, इसका डेरिवेटिव लेना है, प्लस ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो Pn का 1 आ जाएगा, तो log Pn आ जाएगा, log Pn का आएगा 1 over Pn, तो Pn से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ये लैम्डा का 0 आ जाएगा क्योंकि लैम्डा इज अ कांस्टेंट, और ये आ गया माइनस लैम्डा, और Pn का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो ये 1 आ गया, फिर ये कांस्टेंट का आ गया 0, और ये आ जाएगा माइनस म्यू, और इसका आ जाएगा n, राइट. हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Pn, ठीक है, वी आर वेरिंग इट विद रिस्पेक्ट टू Pn, यानी आपने उसको मैक्सिमाइज करना है with respect to the probabilities. We want to find probabilities that makes it stationary, so we have to vary it with respect to probabilities. Okay, so equation aa gayi. Let me now put it equal to 0 to find stationary points, and ये equation बन जाएगी log Pn is equal to -1 plus lambda plus un. सब कुछ ठीक है. मैंने ये माइनस यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, तो फिर ये माइनस, ये प्लस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, सॉरी ये माइनस मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो
ये वाला इधर से और इधर से माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस और वो माइनस इधर चलेगी, तो ये बन जाएगी लैम्डा दिस माइनस म्यू एन। ओके, अब दोनों तरफ अगर एक्सपेंशन ले लें तो लॉ खत्म हो जाएगा। ये आ गया। और इसको मैं कुछ और कांस्टेंट कह देता हूं, लेट मी कॉल इट सम z। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है प्रोबेबिलिटीज की। इसमें अभी भी दो कांस्टेंट्स अननोन है, एक z और एक म्यू। और उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय जी, वो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उनको अप्लाई करके। एक तो ये है कि इसका सम जो है 1 होना चाहिए, should be 1, so which means that z is equal to 1 over minus mu1। एक ये इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन जो है we can get it from the second one, so z n exponential minus mu n is equal to 3.45। और जो z है यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं इधर, तो ये आ जाएगा सम n एक्सपोनेंशियल माइनस n ओवर सम एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू n इज इक्वल टू 3.45। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जिसमें सिर्फ एक ही अननोन है म्यू, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड म्यू, और जब म्यू मिल जाएगा म्यू किधर पुट करके आई कैन फाइंड z। और ये इक्वेशन जो है इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व। यू कैन नोट दैट ये जो ऊपर वाली टर्म है इट्स नथिंग बट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ द क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर विद द माइनस साइन, ठीक है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो ये n इधर आ जाएगा और माइनस भी है तो मैंने माइनस लगा दिया। और अब ये जो है ये ज्योमेट्रिक सम है, ये भी ज्योमेट्रिक सम है, तो ये ज्योमेट्रिक सम का फॉर्मूला पुट करें और आपके क्लोज फॉर्म में म्यू आ जाएगा। म्यू के लिए सॉल्व करें एंड दिस विल गिव यू म्यू एज 0.01, which means that by pn's would be z exponential minus 0.01n। This is the expressions for probabilities for different phases that will satisfy those constraints. Okay, and I think you can from experience already appreciate that this has the Boltzmann form. So the same argument can be used to actually derive the Boltzmann distribution. And let's do that. इधर कर लेते हैं। फर्स्ट करें आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम मैं काफी जनरल लूंगा। इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस which are undergoing the classical motion, जिस हम वो kinetic theory में assume करते हैं। Or you can think of it as collection of lot of harmonic oscillators, and then each of them undergoing that harmonic motion with either quantized or unquantized energies and so on. So suppose we have a system that have some configuration, some possible energy configurations with energy En, where this n varies from 1 to whatever this system, as many states this has, infinite, finite, doesn't matter. The question again is
what are the probabilities of these different microstates? Okay, so system has a lot of possible, configurations or microstates or whatever you want to call them, and we want to find out the probabilities of each of the state. So again, we have these constraints. Constraint number one is always that sum of all probabilities should be one. But here we can put another constraint that, let's say, the average energy of the system is fixed. I don't know, I can call it E bar, which is equivalent to, let's say, if it is a closed system, equivalent to fixing its temperature. So its temperature or energy is fixed and it's given by this. Now with these two constraints, by maximizing entropy, we can find PNs. So what we do, when we are working with thermodynamics, then usually instead of working with H, we work with this entropy, which simply is a constant times the other entropy. But I log K, we have a log natural. So that's why we have a symbol E. So we maximize this quantity. And again, you can, vary with respect to Pn and then put it equal to 0 and solve for Pn. Let me just write the results. So the result would be, let me call this parameter beta this time. So where this Z can be found by normalizing on both sides. दोनों तरफ sum ले लें तो फिर ये इधर आ जाएगा. So Z would be this thing. और जो beta है, we can find it by imposing the second constraint. और एक तो beta की value you can find it in terms of E bar, or लेकिन you can find it in another way as well. If you know, you say that average energy is 3/2 kT, then you can solve beta and it comes out to be 1/kT. Otherwise, beta will come in terms of this E bar. So this is the Boltzmann distribution, but this time it's coming from the maximization of the entropy of the system. Now, this is a probability distribution that if you make measurement of the system, we actually indeed see that the system follows this probability distribution. Okay, so let me take a example from the quantum side for the same principle. This time we have SE rho, which is minus trace rho log rho. अब बजाय 2 base log के I'm using natural log, so we will call this entropy SE. Now our problem is still the same as was here in the Boltzmann side, but now we have a quantum system which is described by a density matrix rho. ठीक है, क्योंकि अगर ये सिस्टम कुछ है तो we can think of it, कोई भी जो थर्मल सिस्टम है कि it's a classical or a statistical mixture of lot of quantum states. For example, अगर ये single particle system है तो we know that it can be a mixture of, let's say, 0 and 1 states. अगर ये 2 particle system, it can be a mixture of 0, 0, 0, 1, etc. state.
So there are a lot of possible states of this system, and the density operator in general is a statistical mixture of this state. So the question is that given a system with constraints, so the constraints this time are this. Number one constraint is this, that whatever row we are going to find row. So we are asking what row represents this system. And row has all the information about probabilities inside it. So we want to find the density matrix of this system. And this is our first constraint, that row has to have a trace one. And then another constraint can be that the expectation value of energy is, let's say this, where this H is our Hamiltonian. So Hamiltonian is the energy measurement operator. So this is a state, and we know that measurement outcomes can be found by multiplying the operator with this thing and finding the trace. So this is the second constraint. So suppose we have a system of fixed energy and a physical system. Physical mean that trace row is 1, and we are asking that what row satisfies these two constraints and maximize this entropy. So we can solve the problem in a similar way by maximizing this function minus trace row log row plus some lambda 1 minus trace row plus beta e bar minus trace row h. So let's minimize this thing. So well, we are lucky. We are lucky because I need to vary row and find the row that satisfies ds is equal to 0. When we'll vary row, this is a constant. So this is going away. This is a constant, this is going away. And I only have terms to vary trace of this thing, trace of this thing, and trace of this thing. And since trace is linear, I can just take trace common and take my variation inside. So let me take, let's say, minus trace outside, and I have to just vary d row log row, minus common ले लिए है, plus lambda row plus beta row h. Equal to 0. And then this can be solved to get, so इसको करेंगे तो this will have, अगर तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, but देखिए असल में तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, नहीं इसको मैं कुछ कर देता हूँ, S00 S01 S10, ये है ना चीज, ठीक है। तो ट्रेस में बेसिकली ये और ये नंबर आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेरी, और जब ये जो वेरिएशन है वो चूंकि ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स है सबकी इंडिपेंडेंट होनी है, ठीक है। तो अब मैं इन सब को वेरी कर लूं और बाद में ट्रेस ले लूं, उसमें फिर यही डाल लें, ठीक है। ये ट्रेस पहले ले लूं तो उसमें भी एक ही आना है, एक ही आना है, और इसी को वेरी करना है, ठीक है। तो यानी असल में तो हमने करना है ये चीज, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेस बाहर करके तो आप डी पहले सबका कर लें और ट्रेस बाद में ले लें, दैट विल मेक लाइफ इजी, ठीक है। ओके सो अच्छा, अब ट्रेस 0 होने का मतलब सो वी कैन कीप इट लाइक दिस एंड देन
ये बन जाएगा log rho plus 1 plus lambda plus beta h is equal to 0. And so in a similar way, if we, let's say, put this equal to 0 as a 0 matrix, and then because that will also give us trace 0, because these are identities. Let's do this and then we'll see what to do. Okay, so what I'm doing is that since this is only trace being 0, but inside of trace 0, I'm just putting it equal to this matrix 0. This is a solution of this, but inverse might not be true. That if trace is 0, this has to be 0. But let's say if these lambda and beta are positive numbers, this is a positive operator, this is a positive operator, then no, this is not a positive operator. Okay, let's come to the general case later. Let me solve for this one first. So ये इसका solution बनेगा log rho some constant और यहाँ से rho आ जाएगा some constant exponential minus beta h, और जो ये constant है I can find it by putting trace rho is equal to 1, which means that z is equal to trace of this. So the state is minus beta h trace of exponential minus beta h. So this state does satisfy this thing, but the question is that is this the most general state? This is something that I didn't look at when I was preparing the notes. I believe that there is, a way of proving this, because the solution of this thing is mostly thought to be this thing, which is true if, we put it equal to 0, but this doesn't have to be equal to 0 in general, because only the trace has to be equal to 0. ये मैं देखूंगा अगर इसका मुझे proof मिला ना तो I'll share with you. But this is a state which is a sort of a state corresponding to the Boltzmann distribution of classical statistical mechanics. So the quantum thermodynamics, that is essentially is just a book about applications of this state. Okay, इससे we can find the thermodynamical quantum state of systems and then work out their properties and transition phases, etc. Other things. And we do see that we reach this state again by maximizing the entropy, which in this case is the von Neumann entropy instead of the Shannon entropy. So basically von Neumann in 1950s mein, when he started working on generalizing the concepts from classical Shannon theory, he also sort of laid foundation for rigorous treatment of quantum statistical mechanics. Okay, any questions? कुछ मैंने प्रॉब्लम जो है ना वो हाईलाइट जो आपको करके भेजे हैं, they essentially deal with the application of this principle.
Okay, if not, let me do another example. But this time, the example relates to GD. Uh-huh. We are imagining we can, diagonalize them, in some using some operators. So the operations are on the diagonals. ये वाला जो है ये तो आइडेंटिटी टाइम कांस्टेंट आइडेंटिटी टाइम कांस्टेंट है ना, तो दिस इज सम कांस्टेंट. ये तो वैसे आइडेंटिटी टाइम समथिंग है, तो जो मर्जी बेसिस आप लेट्स से रो के लिए यूज कर रहे हैं, वी कैन यूज द सेम बेसिस हियर. ओके, सो लेट्स से वी हैव इस सूरत में all we need is a basis that diagonalize रो, और जो रो को डायगोनलाइज करेगी वो इसको भी डायगोनलाइज करेगी, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है. रो और एच जो है इन जनरल आई डोंट थिंक दैट दे कम्यूट, आर दे, डू दे? इन जनरल तो आई थिंक दे डोंट कम्यूट, ठीक है. बट फॉर द थर्मल स्टेट आई थिंक दिस इज अ स्टेट वेयर दे आर गोइंग टू कम्यूट, क्योंकि जो रो है इट्स एसेंशियली रिटन इन टर्म्स ऑफ a matrix of H. So probably a thermal state जो है, so this is going to be valid only for a state which commute with this thing. और ऑलरेडी यहाँ से तो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये रो है, ये फंक्शन ऑफ H है, तो जो H और फंक्शन ऑफ H they have to commute. जी नहीं, वो उनकी बात ठीक है, क्योंकि ये उसी वक्त ट्रू होगा if rho and H commute, and the state that we are getting actually does commute. हाँ, बेसिकली वी आर अज्यूमिंग के कोई एक ही यूनिटरी बेसिस है जो इन सबको डायगोनलाइज करती है, और चूंकि ये तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं तो इट डजंट मैटर, तो रो एंड एच इसका मतलब है दे हैव टू कम्यूट. सो इन जनरल तो अगेन वी हैव दिस प्रिंसिपल इक्वेशन टू सॉल्व फॉर. Okay, so at the end I have actually worked out an example जो उस चीज को शो करती है जो हम लास्ट लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, कि अगर आपके पास एक सोर्स है क्वांटम, and let's say it's preparing quantum states with some probability distribution, then जो इस सोर्स की शैनन एंट्रोपी है वो in general is not equal to the one Neumann entropy of the state that is coming out. So I'm just going to exemplify this thing, and this they are equal only if the system is preparing states which are orthonormal, which are orthogonal essentially. So अगर orthogonal है तो Shannon और one Neumann entropy same है, and if they're not orthogonal then Shannon entropy actually is less than the one Neumann entropy is less than the Shannon entropy, simply because those orthogonal states, अगर वो orthogonal नहीं है तो जो receiver है it will not be able to distinguish them. But now we are going to see mathematically. For that, let me choose let's say a single qubit system. So suppose that our source is preparing states 0 and 1 with some probabilities, let's say like this. So with probability P,
it prepares this state with probability 1 minus p, it prepares this state. तो और जो जीरो स्टेट है, so let's say this is the computational basis state 0 1 state, और जो states हम prepare कर रहे हैं, suppose this 0 tilde state is at some angle theta and this 1 tilde state is some angle theta. So suppose that we are preparing general 0 tilde 1 tilde states, and we'll see that the Shannon entropy H, which is minus P log P minus 1 minus P log 1 minus P. So this is the Shannon entropy of this system, regardless of what states are being prepared. So let's compute the one Neumann entropy of this state. Rho, by the way, would be P 0 plus 1 minus P. Yeah. So इस density matrix की let's compute the one Neumann entropy and see कि उसका इसके साथ क्या relation होता है. Okay, अब ये diagonal matrix नहीं है, ठीक है? So I can't quickly go ahead and just treat these as probabilities directly or one Neumann entropy लिख लूं. So first I'll have to diagonalize it, ठीक है? उसके लिए let me write the zero state. So zero का होगा cos theta 0, sin theta 1, और one state होगी cos theta 1, sin theta 0. ठीक है ना, ये इधर cos है और इधर sin है और ये उलट है. So अब इन zero by the way यहां से ये क्या बनेगी, ये बन जाएगी cos square cos sin sin square, where c is cos theta and s is sin theta. Just shorthand कर दिए. So 1 1 is s square c square cs cs. So ये matrices हैं. तो जो रो मैट्रिक्स है ये हमारा बन जाएगा p 0 0 1 minus p 1 1. So आ जाएगा c square s square p c square minus s square plus p cos 2 theta, right? ठीक बनता है. हाँ ठीक है सर, ये होता है ना, ये टर्म बनेगी cos square into p plus 1 minus p sin square. तो जो ये 1 into s square आ गया, इसमें से p कॉमन ले लें तो cos square minus sin square होता है cos 2 theta. ठीक है, तो जो डायगोनल वो ये और ये टर्म्स हैं, ये p के साथ ये 1 minus p, तो minus p p से कैंसिल हो गया. आई एम लेफ्ट विद cs, यहाँ भी cs, तो नीचे आ जाएगा c square minus p cos 2 theta. तो ये मेरा रो बन गया. अब इसकी जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे टू डायगोनलाइज इट. सो आइगन वैल्यूज इसकी जो हैं इस मैट्रिक्स की वो बनती हैं हाफ 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 p minus 1 cos square 2 theta. सो ये इसके आइगन वैल्यूज आ गई. इसका मतलब है कि जो आपका रो है it can be diagonalized using some vectors
नो समथिंग। सो ये हमारे पास डायगोनल पे एंट्रीज आ गई हैं। और अब इसकी जो शैनन एंड जो वन न्यूमन एंट्रोपी है वो क्या होगी, वो होगी लैम्डा प्लस लॉग लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा माइनस लॉग लैम्डा, ये आ जाएगी। अब जरा उसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, ये है शैनन एंट्रोपी। तो एक तो हम देखते हैं कि अगर थीटा 0 हो तो लैम्डा प्लस माइनस जो है ना वो आ जाएंगी 2 और 0। कौन सा वाला, ये आइगन वैल्यूज आ गई है ना, तो आइगन वैल्यूज से लिखती है। ठीक है, जो जो हमारे पास वन न्यूमन एंट्रोपी है माइनस ट्रेस ऑफ रो लॉग रो। तो अगर जब हम इसको डायगोनलाइज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा प्लस लॉग लैम्डा प्लस 0 0 लैम्डा माइनस लॉग लैम्डा माइनस। ठीक है, तो ट्रेस के लिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब जो वो आइगन वैल्यूज है लैम्डा प्लस माइनस, लेट्स सी व्हेन थीटा इज 0, तो थीटा 0 पे हमारे पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, तो वो आ जाएगा लैम्डा प्लस माइनस इज हाफ 1 प्लस माइनस 4p p माइनस 1। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 1 हो गया, तो ये क्या बनता है, ये बन जाएगा 1 प्लस 4p स्क्वायर माइनस 4p विच इज 1 माइनस 2p स्क्वायर। तो लैम्डा प्लस माइनस आ जाएंगे हाफ 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2p। तो जब प्लस लेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2p, 2 2 से गया 1 माइनस p, और जब माइनस लेंगे तो 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 2p बाई 2 इज p। सो आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो आ जाएगी 1 माइनस p और p, एंड देन योर s वुड बी इक्वल टू h। ठीक है, तो जब थीटा 0 है इसका मतलब है आपकी दोनों स्टेट ऑर्थोगोनल है, और मैक्सिमली वैसे देखें कहां तक हम पहुंच सकते हैं, अगर दोनों स्टेट्स को बराबर कर दें 0 और 1, तो उस वक्त थीटा 45 होगा। ठीक है, हम यूं चलते चलते जा रहे हैं, थीटा 45 पे दोनों बराबर। तो जब थीटा 45 है तो आइगन वैल्यूज क्या बनती हैं, हाफ थीटा 45 का 2 थीटा 90 हो गया, cos 90 0 हो गया, तो ये 1 आ गया। सो दिस इज 1 0। इसका मतलब है कि s क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक आइगन वैल्यू वेल है, इसका इसका log 0 होता है, और दूसरी आइगन वैल्यू 0 है, ये 0 मल्टीप्लाई विद log, दिस इज बाय डेफिनेशन टेकन टू बी 0। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि x log x under the limit that x goes to 0 we have taken it to be 0। सो इसका मतलब है कि जब दोनों स्टेट सेम है तो जो क्वांटम एंट्रोपी है इट्स 0, जब दोनों ऑर्थोगोनल है इट्स इक्वल टू द शैनन एंट्रोपी, एंड इन बिटवीन एक्चुअली यू कैन न्यूमेरिकली चेक। ठीक है, यू विल हैव टू डू इट न्यूमेरिकली, कि जब थीटा लेट से दरमियान में कहीं पे है तो वो जो आइगन वैल्यूज हैं दे वुड बी सच दैट द वन न्यूमन एंट्रोपी इज लेस देन h। So in general, it satisfies this property. Okay.
कोई सविता आपका कोई क्वेश्चन है कि जब थीटा 0 है ना तो ये अगेन वैल्यूज जो हैं ये 1 माइनस पी और पी हो जाती हैं, ठीक है, ये आप वो फॉर्मूले से देख सकते हैं। और वो जो अगेन वैल्यूज हैं वो आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो यू कैन फाइंड दैट। आप लोग कोई स्कीमेटिक सॉफ्टवेयर पैकेज भी यूज करते हैं कभी या नहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? और जैसे अगर इसको आपको कहा जाए तो ये पेपर पे करेंगे तो 15-20 सफ़े लग जाएंगे शायद, और बाद में हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, तो कोई मैथमेटिका वगैरह या इस तरह की कोई पैकेज है ना वो यूज किया करें एटलीस्ट चेक करने के लिए, अगर आपने होमवर्क सबमिट में वो लिखना भी हो तो उसमें डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखे वो फौरन वो आ जाएंगी आइगन वैल्यूज। एनीवे, तो उसमें थीटा 0 पुट करें, थीटा, हाँ, तो यू गेट दिस विच एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू द टू स्टेट्स ऑर्थोगोनल। तो जब दोनों स्टेट्स ऑर्थोगोनल है तो हमारी शैनन एंट्रोपी जो है वो 1 न्यूमैन एंट्रोपी के बराबर है। एंड व्हेन बोथ स्टेट्स आर द सेम, यहाँ पे थीटा 45 है, शैनन जो 1 न्यूमैन एंट्रोपी है वो 0 है। एंड इन जनरल it can numerically be checked that it falls in between. State का मतलब है कि with probability p you pick let's say plus state, and with probability 1 minus p you pick plus state. ठीक है, ओके, सो ये असल में एग्जांपल करने का एक मकसद ये भी था कि आपको समझ आ जाए कि वन ह्यूमन एंट्रोपी अगर कंप्यूट करनी है तो करनी कैसे है इन जनरल, क्योंकि मैट्रिक्स नॉर्मली तो डायगोनल नहीं होता जो डेंसिटी मैट्रिक्स है, तो यू विल हैव टू डायगोनलाइज इट। और वो उसकी वजह ये नहीं है कि बाद में ट्रेस फाइंड करना है, ट्रेस तो जा रहा है डायगोनल ना भी करे तो फाइंड हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हमने लॉग लेना, जो डेंसिटी ऑपरेट जो वन न्यूमन एंट्रोपी है इट्स रो लॉग रो, तो लॉग रो कंप्यूट करने के लिए जरूरी है कि आपका रो जो है वो डायगोनल हो। सो व्हेनेवर यू हैव टू एक्चुअली कंप्यूट वन न्यूमन एंट्रोपी यू ऑलवेज हैव टू डायगोनलाइज डेंसिटी ऑपरेटर। तो डायगोनलाइज करके फिर आप जो चूंकि डायगोनल हो जाता है तो जो लॉग है वो जो डायगोनल एंट्रीज है उनका लॉग, एंड देन उन्हीं से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके माइनस साइन के साथ यू कैन फाइंड एंट्रोपी।